पटली। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।
आज के रक्षा पेंशन समाधान आयोजन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने का आगमन हो चुका है। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। I would like to welcome all the dignitaries on the dais. I would also welcome the heads of pension associations and our honored defense pensioners who join us here today for the Raksha Pension Samadhan Aayojan, an outreach initiative of the Defense Accounts Department for Sparsh pensioners. अब मैं मुख्य अतिथि एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन से अनुरोध करता हूं कि वे द्वीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय और गणमान्य अतिथि। अब मैं आदरणीय एफएडीएस महोदया को उनके स्वागतीय अभिभाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। Shri Girdhar Armane, Defense Secretary, Shri Vijay Kumar Singh, Secretary ESW, Admiral Chima, Secretary NFCS, Shri Praveen Kumar, Additional CGDA, senior officers from the Defense Forces, associations of ex-servicemen, senior veterans, my colleagues from Defense Account Department, my seniors from Defense Accounts Department, friends from the media, ladies and gentlemen. On behalf of the department, I extend a very warm welcome to each one of you who have taken out time and are here with us to participate in this outreach cum Raksha Pension Samadhan Aayojan, which has been organized with a twin purpose of firstly to reaching out to our Sparsh pensioners and apprising them about what Sparsh actually is, and then to resolve and clarify all doubts and issues which are probably agitating their minds. We are indeed very grateful to Defense Secretary who, despite his extremely busy schedule today, has taken out time and is here with us, because not only does he want to show the concern which he has for the Sparsh pensioners and for Sparsh initiative, he also wants to interact with you all post this function. So we are indeed very, very grateful to you for being here with us. I would also like to thank Secretary ESW, who has also taken out time and to actively participate here in today's outreach program, and everyone else who's here with us. Most of you would be aware that Defense Accounts Department was mandated to implement the centralized automated pension system, which we call SPARSH. It is an acronym for System for Pension Administration Raksha. SPARSH was announced by the Government of India in its budget speech by the Finance Minister in 2017, where the government showed a very progressive intent to come up with a web-based
interactive pension disbursement system, wherein the pension would be applied for or claimed on a web portal. It would be sanctioned there and also disbursed therein. So Sparsh actually has become a one-stop solution to all pension-related activities, and it has been fully implemented for the pensioners who are the new retirees from August 21 onwards. And 46 organizations under the Ministry of Defense have been covered under it. As of now, 1.5 lakh pensioners, the new retirees, are already on board, and around 20 lakhs pre-16 and post-16 legacy pensioners also have been onboarded. I do agree that there are certain teething problems which we are trying to resolve, and that's why we are having meets like this. So while on one hand, PCDA Pension, which is the nodal agency for our department to implement this, along with their implementation and knowledge partner TCS and its project implementing agency NISG, they are trying to jointly work towards system development, system operation. They're trying to do migration, problem resolution. On the other hand, they are also working towards information dissemination for Sparsh, and also trying to allay all the fears and misconceptions which have crept in because of lack of certain information, which we would like to bridge that basically. So outreach programs like this and the Raksha Pension Samadhan Aayojans are some of the measures we thought we would take to bridge these and at regular interval to disseminate information about Sparsh. This one-day outreach program along for the recognized associations, senior veterans, and defense journalists and the pensioners from our department is a part of this series of outreach programs. Now, to make this program fruitful, what we have decided is that there will be a presentation by PCDA Pension, where, along with a presentation by our additional CGDA, where we'll try to highlight the nuances of Sparsh. We'll highlight the advantages, how exactly to use Sparsh and how to go about it, and what are the kind of problems which are being thrown up to us and what we have done to mitigate them. So, and I'm quite confident that once this exercise is done today, many of our pensioners would be a little more, convinced about if they have any misconceptions, we would be able to shed them. Now, some of you would be aware that whenever we have these outreach programs, a team of officials from PCDA Pensions also come here. Now, the purpose of doing that is that interacted and heard the officers from PCDA Pension about the in terms of presentation. We also try to resolve your grievances, be it related to documentation or some change in the database errors or software issues. We try to redress them. So I'll request all the veterans who are present here that please utilize. I think I'm told around 100 pensioners have already utilized this facility in the morning half, and I'll request the others, please utilize the services which are available to you today and try to resolve as many problems as in case you have, and so that you could go back happy. Now, apart from organizing these outreach programs, we have another way of reaching out to our pensioners, that is service centers. Now, within the department, we have created 180 plus service centers. Basically, all our PCDA offices are serving as service centers. Now, here again, we try to address the concerns of the Sparsh pensioners. We further try to, whatever information is not available with them, we try to do that. Plus, if anyone is not very technology savvy, we try to bridge that gap and try to fill their information. So, today, during the course of this function, we will be requesting Defense Secretary to inaugurate and formally inaugurate our service center in Centrad. Now, this has a very unique advantage compared to our other service centers, because here we have the TCS representatives available right here. We have the representative of the services who are present, PCDA Pension and CGDA office. The joint control group which looks after the pensioners is also available here. So this service center is like a single point we have tried to create, so that any issue anyone has, you can come here and resolve that. So today, the Defense Secretary would be formally inaugurating that. Now, apart from our own service centers, we have also collaborated with the common service centers. We have collaborated with various banks and set up and made them our service centers, so that if you are comfortable to go to your banks, you please go there. They will extend the same facilities to you.
Today again, sir, we are going to have a few banks are here with us who would also like to sign MOUs with us and join the bandwagon. We already have on board SBI, PNB, HDFC, Bank of Baroda, Kotak Mahindra. And today we will be having the Indian Postal Payment Bank, ICICI, Axis Bank, Bandhan Bank, to name a few, who would be signing MOUs and would join this and become part of the service center. I would just request officials from these banks that please try to extend the best services to our veterans so that the outreach of SPARSH can go further, and whatever other gaps which we are not able to fill, you can fill on our behalf. I would also request the Kendriya Sainik Board and the Zilla Sainik Boards to disseminate this information as far as possible. And with regular endeavors like this, I am very, very hopeful that the Defense Account Department will be able to bridge the last mile connectivity, and we'll achieve the objective of delivering SPARSH in the vicinity of the veterans, and that's what we are targeting. And before I close, I would like to share one more thing, that in the ministry, we are regularly holding meetings with all the stakeholders regarding SPARSH. Just last week, we had a 2-hour-long meeting wherein we took some major decisions along with the service officers. I'll just share one or two with you. The first one was that the SMS which goes to you when you on board on SPARSH simply tells you that you are now on the SPARSH portal. It does not give you your login ID, it does not give you your password, so that generates a lot of anxiety amongst the pensioners. So we are trying to make our SMSs more detailed, which will clearly bring to you when will you actually get your password and ID, because it does take a little more time for reasons which will be explained to you. And apart from that, the second decision, which is very important, which we have taken, is that all your complaints and grievances, irrespective of what medium they have come from, we are taking them on a mission mode. The entire joint control group, which comprises of all the stakeholders like the services, the TCS, the PMG, that is NISG, us, we would resolve them by the end of this year, and we will submit a report to the Defense Secretary in this regard. So with this, I would like to assure you that all effort is being made by the department to ensure that this platform, which is meant for you, to ensure better service to you, delivers the way it has been planned. Thank you very much. Dhanyavad, ma'am. Pensioners' welfare has been the driving force behind the initiatives of the Defense Accounts Department. A vast network of more than 180 service centers are functioning across the country, along with more than 4 lakh common service centers, to ensure minimum grievances for the defense pensioners and access to services at the last mile. The centers cover a diverse range of services like pensioner data verification, profile management, digital life certificate, initiation of family pension, submission of pension grievances, and facilitating the submission of other service requests related to pension. I would now like to request the chief guest to virtually inaugurate the SPARSH Service Center in Delhi. Thank you very much, sir. More than 20 lakh pensioners have been onboarded to SPARSH till date, with the remaining more than 13 lakh defense pensioners to be onboarded soon. स्पर्श से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए कई बैंक हमारे साथ जुड़े हैं। पीसीडीए पेंशन प्रयागराज स्पर्श को लागू करने वाला नोडल कार्यालय है, जिसने रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न बैंकों के साथ एमओयू साइन किए हैं। Today we are extremely pleased to announce the signing of MOUs with 6 more banks. I would now like to invite Sri M.K. Sinha, IDAS, PCDA Pensions,
and Sri Shamdev, IDAS, CDA, to kindly come on the dais and exchange the MOUs. First, I would like to invite Sri Gursharan Rai Bansal, Chief General Manager of India Post and Payment Bank, to kindly come forward for the exchange of the MOU. Under this agreement, Sparsh services will soon be available at more than 650 IPPB manned banking outlets. May I now request Sri Ram Kumar Jaglan, General Manager, Union Bank of India, to kindly come forward. The MOU with UBI will offer services for defense pensioners across more than 8,800 branches pan-India. May I now request Sri Vivek Bhimrao, Senior Vice President and Head for the Government Coverage Group at Axis Bank, to kindly come forward and exchange the memorandum. Axis Bank will be offering various services on Sparsh across nearly 5,000 branches. I'll now request Sri Debraj Shaha, Head of Government Business Group at Bandhan Bank, to kindly come forward for the MOU exchange. Bandhan Bank will be offering various services on Sparsh across nearly 1,190 branches. Next, may I request the representative of Equitas Bank, Sri G. Vasudevan, National Business Manager for Government Business, to kindly come forward and formalize the MOU with the Defense Accounts Department. Under this agreement, Bandhan Bank will offer services on Sparsh across nearly 380 branches pan-India. I'll now request Sri Vikrant Thakur, Head of Strategic Relationships, Government and International Bank at ICICI Bank, to kindly come forward and exchange the MOU. ICICI Bank will offer Sparsh services at 275 designated branches. Thank you very much, sir. We have among us the Vice Chief of Naval Staff. It is our privilege to have him join us here today on the dais. Please welcome him with a huge round of applause. May I now request the additional CGDA, Sri Praveen Kumar, IDAS, to kindly elaborate on the macro design of the system for pension administration Raksha, that is Sparsh, with his introductory address. Honorable Defense Secretary, Secretary ESW, Secretary NCS, Vice Chief of Naval Staff, FADS,
senior officers from 3 services, CONMD, CSC, senior VP TCS, pensioners associations, representatives, our veterans, Veer Naris. I just like to elaborate on the spurs and would like to clear a lot of doubts that are there about the spurs with today's interaction. As you know that one of the primary responsibility of the department is to disburse pension for our 3 forces as well as civilian, defense civilian people. So sanction was being done from 3 PSAs as of now till spurs was implemented. There were one of the PCD in Allahabad, PCD in Navy and PCD Air Force. So these were the 3 agencies, 3 different agencies, they were involved in sanction of pension. Apart from this, one of the notable thing was there that disbursement used to happen from different banks, DPDOs, which were, they were our own, and for Gorkha pensioners from Indian Embassy, Nepal, and some treasury pensioners were there from the different state treasuries. So they were working in a different technological level, and it was totally manual system used to prevail. The pensioner used to approach his record offices, then paper used to be initiated, used to go to PCDA pension, subsequently PPO was being issued. It used to go to banks, and banks will take its own time in implementation and making the first payment, which generally happen to be big payment. So the paper-based system were having its own challenges. I would like to elaborate on those things, but one of the key things, some of the facts we have brought it here, that there are 32 lakhs defense pensioners. This is such a large number, and they constitute about 57% of total central government pensioner. Total central government pensioner is 56 lakhs. Our defense pensioners are 32 lakhs, which is 57%, but consume 65% of the defense total central government pension budget. Defense pension, unlike the civil pension, is highly complex. The complexity comes out because of the fact that different type of family pensions do exist in this thing. Liberalized family pension, special family pension, war injury pension. So the complexity is quite large, and handling such type of complexities with the manual system was a great challenge for all of us. So it was decided, as our Honorable FADS has already mentioned, that in the 2017, the then Honorable Finance Minister in his speech, budget speech, announced that we will have a web-based portal, web-based system to handle the defense pension system. One of the feature also comes in this defense pension is that generally our people serve for 20 years, 20 to 25 years, but the pension continues for 65 to 70 years, which is very long period. And a person has to face 6-7 pay revisions, which results into a pension revisions. In between, subsequently that many of the OROPs, every 5 years OROP also has, 1 year of OROP has already come, another may come also. So that revision entails a great challenge in a manual system. So that's why we decided that let us have the digitized thing so that all pensioners' needs are handled in one system. So all the stakeholders, whether the records, whether it is the sanctioning authorities, and whether it is the disbursing authority, they all have come in one single platform. So that is the spurs. The legacy had generated so much paperwork. We have just given that 51 badminton courts can be filled up. In PCD Allahabad, we have all the legacy papers, the papers of the erstwhile, even pre-47 pensioners' papers are also available. So all the papers records are there, which can fill up 51 badminton courts. Just like to say how the manual system used to prevail in our system, that a pensioner had to visit his personally to unit office, record office, and subsequently the paper will float to audit offices, then the sanction will take place, then the PP will get generated, and the banks, it will be dispatched through paper mode to the banks, who will take their own time in disbursement. Normally it is to take 15 to 18 months.
in the sanction and subsequently about 3 to 6 months in payment. Now Spurs era has curtailed the whole process. Now in 60 days time, you don't have to start the PPO pension initiation before 60 days. In 60 days time, we are able to complete the whole process. Now pensioners has his own right to check his family particulars, details, etc., which earlier used to be a big sore point, that my family details are missing or something. So we give opportunity to pensioners to verify his personal details, and once it is okay, then it goes for automatic sanction. Now the sanction is automatic, no human intervention. It's a rule-based sanction has been developed, so that automatically the PPO gets generated and it pushed for the payment, and payment files are automatically generated. Within 7 to 10 days, the payments are also released after the retirement is confirmed. So this is the beauty of the Spurs system, that everything has been automated under one single platform. Here I have compared what used to be the pre-Spurs era. We have defined pre-Spurs era. Normally 60%, not more than 60% people used to get the PPO before retirement, which has now we are touching 99%. I will show a slide. As per the latest 110,000 pensioners whom we have sanctioned, new retirees whom we have sanctioned on Spurs, 99% sanctions are taking place on time. Delayed sanction, that sanction will take its own time. Time factor was there, 15 to 18 months. 3 to 6 months was the payment cycle. Mass revision was another big problem. That in the pay commission, 7th pay commission, the revision took, for civilian we carried out more than a year it took to issue the revision. And in the case of armed forces, many of the revisions are still pending. Almost 2 lakhs records are still pending. Nevertheless, they are getting the correct pension as per the policy. But the mass revision is a big problem in a manual system. Pensions revision, and pension revision is very common in the defense side, because the many changes they do take place, and we generally come post retirement and all. So those changes are also taking place its own time. Family pension is quite faster in the system. Grievances, you can lodge your grievances on the portal and it will be attended to. Annual identification has been simplified. Earlier you had to go to the banks. Now you can control yourself that the identification you have been given medium. Digital life certificate you can do on your own on the system. Manual life certificate also, if it is not there, then you can upload and it gets approved. So everything the systems have been made beneficial for the pensioner's point of view. We analyzed certain data while we were implementing this thing, that core PPO issued by PCDA had taken almost 6 months to get it implemented. It's not that there was an inefficiency on the part of banks, but they don't have the core competence. So basically, that was the reason that it generally used to take more than 6 months to implement the whole thing. So having shown this type of gaps in the system, it was decided that let us have a system where the pensioner is at the core. The pensioner will determine everything. He will control his own processes. He will be given tracking. He will be given a status. He will be able to monitor his own PPOs. He will be able to get pension slip. Everything with this objective that pensioners at the core, the whole process has been designed. ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि आप खुद अपने बारे में, अपने पेंशन के बारे में खुद सिस्टम से देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कोई गैप्स है तो उसको ठीक करा सकते हैं, जो कि पहले के सिस्टम में संभव ही नहीं था उसको करना। और ये अगर संभव भी होता तो उसमें इट यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगता था उसमें। तो ये जो वेब बेस्ड पोर्टल जो बनाया गया है, इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई है, इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, आपको सारी चीज़ें हर स्टेज पे पता चलती रहती है और आप कमांड एंड कंट्रोल में आप बैठे हुए हैं। सो यू कैन हैव योर ओन सेल्फ सर्विस, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ईज ऑफ पर्सनल प्रोफाइल को अपडेट करना बड़ा आसान हो गया है।
पहले हमारे पेंशनर्स की ग्रीवांसेस आती थी कि मैं अपने स्पाउस का नाम करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उनके पैन नंबर मिसिंग है, उनके एड्रेस मिसिंग है. ऑल दोज थिंग्स we can handle with this system very easily, smoothly, and that will be provided, the service will be provided by our service center which are operating. Or you can do it on your own. Both the facilities are there. So journey initially was not very smooth because when we started embarking for the civilian pensioner, defense civilian, in the MOD we have a very large component of defense civilians also. There were 49 HOD organizations having 2,354 offices scattered all over the country who were initiating the pension. And all those have to be onboarded on the new system. So it was a great challenge. Somehow we have succeeded. All of them have been mapped. And you'll be surprised that 559 cadres right across from all services, be it the MES or the Coast Guard or the Border Road or ordnance factories, ASC, Air Force, Navy, everybody. So all these, about 559 cadres we have onboarded, having 4,021 posts, and they have been mapped with the revised 7th Pay Commission pay. So now this was a great challenge. Now at the moment 16,000 users are operating on the system. It's a big challenge for us to make sure that everybody is able to, is given the user ID password for, this is, I'm talking about the from officer's perspective. But payment is being, payment, as I told that there was different channels operating for payment. They all have been clubbed together in one system, which is called consolidated in one payment agency, which PCD Allahabad is doing under RBI Kuber. So the payment is going from RBI e-Kuber. One thing generally we are hearing that हमें पेंशन नहीं मिलेगी etc. ऐसी बात नहीं है. आपका बैंक अकाउंट वही है जहाँ पे आज तक आपको मिलता रहा है. Is only that agencies are pushing the payment to the same bank. You will get the same thing. So you need not worry. हाँ, आपको एक एडिशनल सुविधाएं और दी जा रही हैं जिससे आपको और आप अपने कंट्रोल कर पाएंगे अपने सारी चीज़ों को, अपने सारे पेंशन की व्यवस्था को खुद संचालित कर सकते हैं. आपको किसी तरह की भय की ज़रूरत नहीं है. आप आराम से उस चीज़ों को कर सकते हैं और फिर हमारे ऑफिसेस और हमारे जो सर्विस सेंटर वो सारे काम को हैंडल करेंगे. यहाँ पे एक हम लोगों ने दिखाया है कि हाउ वी हैव ट्रांजैक्शन जो हमारे हुए हैं. ये नए पेंशनर्स के लिए हम लोगों ने बनाया है कि 1,10,000 पेंशनर्स हमारे इस पे नए पेंशनर आए हैं. हम लोगों ने अलग अलग डेट पे आर्मी के लिए अगस्त 2021 से स्टार्ट किया. आर्मी वॉज द लेटेस्ट टू ज्वाइन. बिफोर दैट डिफेंस सिविलियन वी स्टार्टेड इन ए लिमिटेड मैनर in October 2020, एयरफोर्स in February 21, नेवी June 21. So this is the way we have started, and 1,10,000 पेंशनर हमारे जो आए हैं उसमें 99% के PPO उनके रिटायरमेंट के पहले उनको दे दिए गए हैं. और ये पोर्टल पे चला जाता है, SMS चला जाता है, पोर्टल पे आप खुद देख सकते हैं, आप PPO डाउनलोड कर सकते हैं बिफोर रिटायरमेंट. सो एवरीथिंग इज़ फिजिबल नाउ. और उनकी पेमेंट भी हम लोगों ने 7 to 10 days आफ्टर रिटायरमेंट, विच यूज टू टेक 3 to 6 months, हम लोगों ने उनको पेमेंट करना शुरू कर दिया है. एंड दिस इज हैपनिंग वेरी फास्ट. This is the pensioner onboarding versus pension disbursement trend. Last month we have completed migration of, the total migration that we have done is almost 19 lakhs, and 1 lakh is the new pensioners, so almost 20 lakhs pensioners have come on spurts, and we have made a payment of 5,515 crore. And ultimately when everybody gets onboarded, so we'll touch a figure of almost 8 to 9,000 crore per month. So this will be the monthly outgo from this system. But the journey was not very smooth. Our basic problem was there when we this problem, and the PSA data were deficient. Many gaps were there. As you see that the pensioners' life cycle is 60 to 70 years. Many PPOs were issued in manual form. They were not digitized. Even the banks were not having the, in a digitized environment they were maintaining. They were many times they were keying the data, data entry was done manually, etc. So they were the big problem. So when the legacy data was the biggest problem for us when we started migrating, resulting into non-identification. More than 2 lakhs we have not been able to identify, which we are sorting it out, and we will improve the thing. Or payment mismatch. The payment mismatch used to say that the TCS was calculating as per a rule engine based on the data, but you are not matching with the actual payment which is being given by the bank.
but gradually we are clearing the cases and gradually we are migrating. Non-availability of sanctioned data. Many disability pensions were issued in manual form and the records were not available. So those were the certain challenges. So that were there while we started migrating. We have done the migration of 90 lakhs. Total migration which we are targeting for almost 30 lakhs or so. Because about a lakh pensioners, they are Gorkha pensioners. It will be difficult for them to bring on the portal. They will continue because some technical issues are there. The Gorkha, rest of the things we are trying to clean up the whole thing, and we will gradually start. Will migrate in a time-bound manner. Another big problem when we started migrating was the non-availability of Aadhaar and mobile. You can see that Aadhaar was implemented 14, 15 or so. And the earlier pensioners, I am talking about the pensioners of 50s, 60s, many of the Aadhaar numbers were not available in the data. So we requested banks to provide, and banks have also obliged us and then given us, but still the gaps are there. Many considerable number of pensioners do not have the Aadhaar number available in the database and the mobile number. And mobile number, these are the two important factors which are slowing down our process of migration. If we are able to overcome these two things, I think we will move in a faster lane. Then another one, the restructuring of civil organization. When we did the pre-16 revision for civilian pensioners in 2017, after the pay commission order was issued, there were 4,000 offices from where we got the records. And now while we are migrating, so they have internally restructured their own processes. Now we have mapped, as I mentioned, that about 2,354 offices we have mapped. Now we know that these are the offices who are going to initiate the pension. Earlier it was not clear from where the pension papers are coming, no records were maintained. So now everything is now under control. So the mapping of was a big challenge. Wrong payment of CBP is another area. Incorrect flag, and because the commutation is restored after 15 years. When the banks provided us the data, that flag was missing. That is since when the payment was made and when the restoration is due. So many times mismatch has happened because of this. So these problems are getting sorted out, and though we have migrated, gradually we are cleaning the data also. So that's the most important part. We are doing that. We are cleaning the vital fields, cleaning the data, and then we are migrating. While migrating last many months, we processed about 26 lakhs records. And in 26 lakhs records, we found that 40% mismatch were there in payment. So this was a big figure to us. It is really that 40%. I'm not saying that the banks were at fault, but this is not their core competence. But nevertheless, we find that 40% of the pensioners either were paid more or they were paid less. But we are clearing that thing. In the case of underpayment, we have already increased the wherever the payment due is right. For example, family field medical allowances, one time or some such fields, if they were missing, so we have done it wherever underpayment is there. But rest of the data we are cleaning up, and a committee is there in PCD Allahabad which is examining the overpayment aspect. And then once everything is confirmed that they are all right, then only we will migrate. So that's why the migration is slowing down a little bit because of the data mismatches and the complete records not being available. Here I would like to assure that the bank pensioners that there is no change in bank account. One of the major things, मुझे आप बैंक अकाउंट चेंज कर देंगे, मुझे आप ये कर देंगे तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी. किसी का पेंशन नहीं रुकने वाला है. मिनिस्ट्री हैज़ बीन काइंड इनफ, 3 महीने की एक्सटेंशन आ गई है. आपको फरवरी तक आपको आइडेंटिफिकेशन कराना है. आइडेंटिफिकेशन हम लोग एक मिशन मोड में इसको कंप्लीट करा देंगे सो दैट आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो. किसी आदमी के किसी के भी पेंशन नहीं रोकी जाएगी. हम लोग उसका ख्याल रखेंगे. और जो लॉगिन क्रेडेंशियल की बात हो रही है, लॉगिन क्रेडेंशियल बनने में कभी समय लगता है क्योंकि हम लोग जब मास माइग्रेट कर रहे थे तो 5-5 लाख रिकॉर्ड को जब माइग्रेट करते थे तो उसमें उनकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था. लेकिन अब वो सिस्टम चूँकि हम लोगों ने मेजर हर्डल क्लियर कर लिया, अब हमारे माइग्रेशन 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होने वाली है. तो हम लोग वी विल बी एबल टू गिव यू द लॉगिन ID पासवर्ड विद इन 15 डेज ऑफ माइग्रेशन. और इसके अलावा जो
जो हमारे सर्विस सेंटर हैं उनको भी हम लोगों ने रोप इन कर लिया है और संख्या बढ़ती जा रही है और हम लोग चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज निरंतर आप लोगों को मिलती रहे, जिसके आप हकदार हैं। तो कुछ जो हमारी जो हमारी एक्सरसाइज करने के बाद से कुछ हमें जो स्पिन ऑफ आने वाला है, वो जस्ट मैं एक दो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ECHS को जो आज अलग हमारे से जुड़े हैं वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारी जो पेंशनर डेटा को अपने सिस्टम में वो ले जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ECHS के जो फैसिलिटी मिलती है उसमें जो FMA मिलते हैं, FMA वाले को ECHS की नहीं मिलेगी एंड वाइस वर्सा। तो वो चीज़ों को हम लोगों ने इस पर वो टाई अप होने जा रहा है। हमारे 2-3 एरिया हैं जो हमारे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और जो आउटरीच और जो उनको सर्विस देने की प्रक्रिया में 2 एरिया हम लोग अभी करने का सोच रहे हैं। व्हाट्सएप बेस करेंगे ताकि व्हाट्सएप पे ही आपको सारी जानकारी मिल जाए, जिनके पास भी स्मार्टफोन है। हाँ, हो सकता है बहुत से लोगों के पास नहीं हो तो सुविधा नहीं मिल पाएगी, बट व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग एक सुविधा देने की कर रहे हैं। और AI बेस्ड हम लोग ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी मोड से 5-6 मोड से भी SMS हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, कॉल सेंटर हो या किसी भी मोड से अगर आप अपनी ग्रीवांसेस हमें बताते हैं तो एक टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बेस पे आपकी ग्रीवांसेस हल की जाएगी, उसका निराकरण होगा और आपको सूचना दी जाएगी। तो ये सिस्टम अभी इन पाइपलाइन है, वो जो हम लोग अभी इसको करेंगे, AI बेस्ड ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम। इसके बाद हम लोगों ने एक अपना सुझाव दिया है, ये आगे की चीज़ें हैं कि एक सिंगल कार्ड बना दिया जाए जो स्मार्ट कार्ड के तौर पर रहेगा, जिसमें चिप में उनकी पेंशनर के सारे डिटेल अवेलेबल रहेंगे। आपको जो एक्स सर्विसमैन मिनिस्ट्री से जो मिलती हैं, बहुत सी वेलफेयर की सुविधाएं मिलती हैं। एयर ट्रैवल कैंसिलेशन है, एयर ट्रैवल में है, बहुत सी सुविधाएं जो हमारे एक्स सर्विसमैन को मिलती हैं, वो अगर चाहें तो इसमें स्मार्ट कार्ड के माध्यम से आप सारी व्यवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई और 10 तरह के डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 एजेंसीज को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या लोन लेने की बात हो बैंकों से या किसी और चीज़ को करना हो, उसको आपको एक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आज के दिन जो हमारी जो आउटरीच चल रही है, उसमें आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जैसा मैडम ने कहा कि हमारे TCS भी यहीं बैठे हुए हैं और वो लोग अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं उसको रिजॉल्व करेंगे एंड हम इंश्योर करेंगे कि यू गेट द बेस्ट पॉसिबल सर्विस थ्रू स्पर्श। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ हमारे चैलेंजेज और हमारे सर्विसेज की तरफ से मिले हैं, उसको भी हम लोग इन टाइम्स टू कम विल रिजॉल्व एंड इस ऑनगोइंग प्रोसेस विल हैंडल दोज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Principal Controller of Defense Accounts, PCDA Pensions Prayagraj, is the nodal pension sanctioning and disbursing authority under SPARSH project. I would now like to invite Sri Himanshu Tripathi, Deputy Controller of Defense Accounts in the Office of PCDA Pensions, to give a presentation on the detailed functioning of SPARSH, recent initiatives, and the way forward. मंच पर आसीन उच्च अधिकारीगण, सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सभा में आज के आयोजन के केंद्र बिंदु हमारे पेंशनर्स, आप सभी को प्रणाम। जैसा कि एडिशनल CJDA सर ने बताया कि स्पर्श के पहले की क्या व्यवस्था थी और स्पर्श के बाद किस तरह से एज फार एज पेंशन इक्विटी सिस्टम इज कंसर्न कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अभी ये जो हमारी यात्रा रही है स्पर्श इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद हमारे जो पेंशनर हैं उनको माइग्रेट करके स्पर्श पर ले आने के लिए, इट हैज़ बीन अ लर्निंग। बहुत कुछ हमने सीखा है, कुछ समस्याएं हमारे बीच में आई हैं जो हमने खुद हमारी जानकारी में आया या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया या पेंशनर्स एसोसिएशन के माध्यम से हमारे पास आया। उनको दूर करने के लिए, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट ने अभी क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या चीज़ें चेंज की हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहला इनिशिएटिव, क्योंकि हमने पिछले 4 महीने में लगभग 14 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को माइग्रेट किया और नवंबर में उनका एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि बैंक में सबका आइडेंटिफिकेशन
नवंबर में ही होता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था आइडेंटिफिकेशन का। हमारे पास लगभग 11.5 लाख पेंशनर्स का आइडेंटिफिकेशन कराने का चैलेंज था। इस कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ने हमें अप्रूवल दिया 3 महीने का एक्सटेंशन, सो दैट कि बिना किसी पेंशनर्स को समस्या के उनकी पेंशन ना रुके और हम ये सुनिश्चित कर सकें कि सभी का एनुअल आइडेंटिफिकेशन हो गया। एज ऑन डेट जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से लगभग 7.25 लाख, डीएलसी जो सर्विस सेंटर्स के थ्रू है लगभग 71,000, और एमएलसी जो पेपर बेस्ड है जहाँ पे इंडिविजुअल किसी गस्टेड ऑफिसर से साइन करा के अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, लगभग 40,000 हमारे पास आ गया है। और बाकी बचे हुए पेंशनर्स के लिए हम टारगेटेड मोड में उनको अचीव करने के लिए हम सारे प्रयासरत हैं। और दूसरा एक इनिशिएटिव जो हुआ, क्योंकि लेगेसी पेंशनर्स जिनको हम माइग्रेट किए उनका आधार पैन जो कि अपने आप में बहुत क्रूशल है एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, इनकम टैक्स के लिए, तो हमने बैंक्स के साथ उनसे वो डेटा लिया। और अभी जो हमारे पास लगभग 20 लाख पेंशनर हैं उनमें से लगभग 17.5 लाख के आधार हैं, लगभग 16 लाख के पैन हैं और मोबाइल नंबर लगभग 19 लाख का है। तो ये डेटा है जिसको हम लगातार सिंक कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। हर महीने जो हम पेंशनर्स को माइग्रेट कर रहे हैं उनका हम तुरंत उनकी जानकारी के लिए कि आपका आधार या पैन हमारे पास आ गया है, PCDA-P की साइट पे हमने दिया है और इसको हम स्पष्ट डेटाबेस में अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ पेंशनर्स यहाँ पर भी होंगे जिनका डेटाबेस अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट इसको हम कॉन्टीन्यूअस कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे आधार की मैं बात करूँ तो लगभग 1 लाख आधार हमारे पास SBI से कल आया है जिनको हम अभी अपडेट करेंगे। API इंटीग्रेशन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ओवर सेंट्रलाइजेशन, PCDA पेंशन ही सब कुछ करेगा एज ए PDA। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे मिले और सबसे बड़ा इंटरफेस आपके लिए आपके बैंक्स थे, बैंक ब्रांचेस थे। तो वहाँ पर सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमने 2 कदम उठाए कि एक तो हम उनको एज ए बैंक सर्विस सेंटर जो स्पर्श सर्विस सेंटर की तरह काम करेंगे, और उसमें भी सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है आपका एनुअल आइडेंटिफिकेशन। SBI के साथ हमने API इंटीग्रेशन कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, इसका साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चल रहा है और द मोमेंट इट इज़ कम्प्लीटेड ये लाइव हो जाएगा और आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी अपना आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। इस वर्ष का जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि 12 लाख लोगों का आइडेंटिफिकेशन कराना, हमने बैंक के साथ डिस्कशन किया और उन्होंने माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए सुविधाएं करी। तो नवंबर में जो पेंशनर्स हैं, PNB है, IOB है, इंडियन बैंक है, सारे बैंक्स हैं, उन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन किया उनका डेटा हमारे पास आ रहा है। अभी पिछले हफ्ते तक हमारे पास 6 बैंक्स का लगभग 46 लाख पेंशनर्स का आया है। SBI, PNB जो कि लार्जेस्ट हैं उनका डेटा हमारे पास आ रहा है एंड बाय द दिसंबर एंड वी विल रिकनसाइल जो पेंशनर्स माइग्रेट हो गए हैं बट उन्होंने बैंक ब्रांचेस में जाके आइडेंटिफिकेशन किया है। तो ये सुविधाएं हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है मोबाइल। आपका मोबाइल ही आपकी जानकारी का केंद्र बिंदु है। तो आपका मोबाइल, मैक्सिमम लोगों का मोबाइल हमारे पास आ गया है, हालांकि 1.5 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं जिनका मोबाइल नहीं है या जिनका मोबाइल सही नहीं है। अगर उनकी संख्या की बात करें तो हमने स्पर्श लॉगिन पेज पर बिना लॉगिन किए एक फैसिलिटी है कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। जिन पेंशनर्स का आधार हमारे पास है उनके लिए सुविधा आसान है क्योंकि आप आधार OTP से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली जिनका आधार नहीं है उनको आधार अपडेट करने के लिए भी प्री लॉगिन फैसिलिटी है। यहाँ पर एक समस्या ये ज़रूर है कि जिनका आधार में और सर्विस डॉक्यूमेंट में नाम में वेरिएशन है, और क्योंकि ये स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस है सिस्टम से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, इसलिए वेरिएशन अगर आपकी नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा भी चेंज है तो सिस्टम उसको रोक रहा है। बट जिनके नाम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है, उनके लिए ये स्ट्रेट थ्रू विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स ये हो जाता है। पर जिन पेंशनर्स की ये समस्याएं हैं तो ज़्यादातर जिनका आधार हमें बैंक से मिल गया है वो अपडेट हो गया है, पर जिनके नाम में स्पेलिंग में मिसमैच है तो या तो उनके लिए सुझाव है कि अगर वो आधार में अपडेट करा सकें, अन्यथा रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू वो अपडेट अपना आधार सीड करा सकते हैं। एक और बड़ा इनिशिएटिव है, जैसा कि सर ने बताया कि PCDA पेंशन में बाइंडर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, 1920 से डॉक्यूमेंट हमारे पास रखे हैं। अगर मैं उसके क्वांटम की बात करूं तो लगभग 4.25 लाख बाइंडर हैं और नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करूं तो लगभग 25 करोड़ पेजेस हैं। एक मैसिव डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज चल रही है पिछले 3 सालों से और एज ऑन डेट हम लगभग 13 करोड़ इमेजेस, अगर मैं PPO, क्योंकि एक पेंशनर का उनके जीवन काल में कई PPO, जब भी उनका मास रिवीजन होता है, कोई कोरिएंडम होता है तो 7 से 8-10 PPO तक होते हैं,
लगभग 50 लाख के आसपास पीपीओ हमने स्कैन कर लिए हैं, डिजिटाइज कर लिए हैं, और वो हमें हेल्प कर रहा है उनके डेटा को अपडेट करने के लिए, उनके ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए। बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन वी आर एबल टू एक्सेस दियर डेटा, वो डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है और वो बाकी स्टेक होल्डर्स को भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। एक दूसरा जो सबसे क्रूशल है पूरे स्पर्श के लिए, दैट इज़ स्पर्श पोर्टल, जहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस और उसके फ्रेंडलीनेस को लेके इश्यूज़ है, इस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे पास जो भी सजेशंस आ रहे हैं हम उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और आगे भी हम उसको करेंगे। इनिशियली पोर्टल केवल इंग्लिश में था, हम बाइलिंगुअल कर चुके हैं। आगे के टारगेट्स में है कि हम उनको और रीजनल लैंग्वेज में कर सकें। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए था, एंड्रॉयड के लिए हम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर चुके हैं। एप्पल के iOS वर्जन के लिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसी तरह हम पोर्टल को और यूज़र फ्रेंडली बनाने की ओर लगातार काम कर रहे हैं। स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम पीसीडीए पेंशन बीइंग द नोडल एजेंसी, हम लगातार पेंशनर्स के बीच में, पेंशनर रैलीज़ में, पेंशनर एसोसिएशन या हमारे जो भी डायरेक्टोरेट ऑफ वेटरन्स हैं उनके थ्रू जो भी आयोजन हो रहे हैं वहाँ पर जाकर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो हम उनको पेंशनर्स को अवगत करा रहे हैं, और जो समस्याएं या जो नए इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हम वहाँ से ये स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम लगातार आयोजित कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैंने बताया कि एंड्रॉयड के लिए हो गया है। एक दूसरी समस्या जो पेंशन कॉल सेंटर को लेकर लगातार शिकायत आ रही है कि जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो वर्किंग नहीं है। बिफोर स्पर्श जो पेंशन कॉल सेंटर इलाहाबाद में था उसकी कैपेसिटी लगभग 250 कॉल्स पर डे की थी। नाउ विच वी हैव इंक्रीज्ड, क्योंकि जो कॉल सेंटर है बीइंग द डिफेंस पेंशन कॉल सेंटर, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की भी ज़रूरत है। हमने लोगों को ट्रेन करके एज ऑन डेट जो हमारे पास करंट कैपेसिटी है करीब 4500 से 5000 कॉल्स हम पर डे कर रहे हैं और उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम द कॉल्स करेंटली वी आर गेटिंग इज समवेयर अराउंड 10,000 11,000 पर डे। तो वी आर इन द प्रोसेस टू इंक्रीज इट फर्दर सो दैट कि पेंशनर्स को उनकी जानकारी, क्योंकि ज़्यादातर ग्रीवांसेस केवल उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं और उससे रिलेटेड हैं, तो हम उनको ये एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन है कि स्पर्श पोर्टल जो आ रहा है, जो भी पेंशनर, ये बात हम बार बार बता रहे हैं, स्पर्श पोर्टल केवल और केवल आपको आपकी जानकारी देने के लिए है। आप पोर्टल यूज़ करते हैं नहीं करते हैं इसका आपके पेंशन पेमेंट से कोई लिंक नहीं है। आपको पेंशन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हम कुछ चैनल्स देख रहे हैं जो एक्स रिटायर्ड कुछ हमारे हैं जो बताते हैं पेंशन के बारे में। वहाँ पे ये आया कि नहीं, आपका पोर्टल अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पेंशन रुक जाएगा। तो ये आपको रीअश्योर करने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं। पेंशन रुकने का सिर्फ और सिर्फ कारण एक, या तो आपने एनुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया जो कि एक एनुअल प्रोसेस था। स्पर्श में आप वो थ्रू आउट द ईयर कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, इनिशियल में कुछ लोग, जो कि आज नहीं हो रहा है, पिछले 6 महीने में कुछ केसेस में आया था कि जब MLC, जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे उस वक्त पोर्टल हमारा बाइलिंगुअल भी नहीं था, केवल इंग्लिश में था, तो गलती से कुछ पेंशनर्स ने कन्विक्शन यस कर दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कन्विक्टेड हैं पेंशनर तो उस पीरियड के दौरान पेंशन एंटाइटलमेंट नहीं होता है। हालांकि हमने उसको भी अभी हटा दिया है और वो वहाँ पे प्रॉम्प्ट करता है सिस्टम, ताकि ये गलती ना हो। तो दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनुअल आइडेंटिफिकेशन, और इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो स्पर्श पे अवेलेबल है, यहाँ पे मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग जो भी प्रोविज़न है वो सारे स्पर्श में हैं। स्पर्श ने उसके साथ कुछ चीज़ों को ऐड किया है, किसी भी एक चीज़ को हटाया नहीं है। यहाँ पर जीवन प्रमाण जो कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, जहाँ पे स्पर्श एज ए PDA रजिस्टर्ड है। अगर आपका आधार सीडेड है, अगर आपका आधार अवेलेबल है कि नहीं वो आप तुरंत PCDA की साइट पे चेक कर सकते हैं अपना PPO नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर। और अगर आपका आधार हमारे पास है तो आपको वहाँ पे अपना PPO नंबर और आपका आधार ऑलरेडी है, बैंक अकाउंट नंबर, PDA आप स्पर्श सेलेक्ट करके आप अपना आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो पेंशनर्स आइडेंटिफिकेशन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, जिसमें बैंक सर्विस सेंटर्स हैं, डिपार्टमेंटल सर्विस सेंटर हैं, और सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास कॉमन सर्विस सेंटर्स का है जिन्हें हम जन सेवा केंद्र भी कहते हैं, उनके माध्यम से आप आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। और पिछले 2-3 महीनों में बहुत तेज़ी से इसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है और लाइफ सर्टिफिकेट जो हमारे सर्विस सेंटर्स के माध्यम से हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी बढ़े हैं। इसके अलावा आप खुद भी बिना कहीं जाए
आप अपना एमएलसी अपलोड कर सकते हैं। आपको किसी गज़टेड ऑफिसर या जो भी आपके नोन है उनसे आपको अप्रूव करा के आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ये सीधे पीसीडीए पेंशन टास्क होल्डर के पास आता है, वो अप्रूव करते हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है। इसके अलावा डीएलसी है, अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो वो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो। इनिशियल फेज़ में हमारे पास ये दिक्कत आई थी कि जीवन प्रमाण कराने के बावजूद लोगों के आइडेंटिफिकेशन फेल हुए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था आधार ना होना। जैसा कि मैंने बताया, अभी भी हमारे पास लगभग 2.5 से 3 लाख पेंशनर्स हैं जिनका आधार नहीं है। तो आधार नहीं है तो जीवन प्रमाण पोर्टल से वो रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस नहीं होती। दूसरा कारण है, अगर आप पीडीए, अगर आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वो स्पर्श के पास वो रिक्वेस्ट ही नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन आपकी जानकारी के लिए कि आपको पीडीए स्पर्श सेलेक्ट करना है एंड जो पीपीओ नंबर आप डालें वो या तो आप स्पर्श पीपीओ नंबर दें या आप अपना ईपीपीओ नंबर दें। ये दोनों ही नंबर 12 डिजिट ऑल न्यूमेरिक हैं, मतलब उनमें केवल संख्याएं हैं। लेगेसी में क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक था, स्लैश था और उसमें कई चीज़ें और थी, उन सबको हटा दिया गया है और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। माइग्रेशन, इट हैज़ बीन अ लर्निंग। इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, आपका माइग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए सिंगल पोर्टल है पीसीडीए पेंशन की साइट, जहां पर आप कोई भी एक डिटेल डाल के आप अपना पीपीओ नंबर डाल सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, आप अपना सर्विस नंबर, कोई भी एक डिटेल डाल के आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ दी ओनली पोर्टल जहां से आपको माइग्रेशन का स्टेटस पता लगेगा। अगर आपके पास आपको जानकारी चाहिए कि आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये डेडिकेटेड पोर्टल है। जिस भी महीने कोई पेंशनर माइग्रेट होते हैं सबसे पहले इसी पोर्टल पर अपडेट करते हैं। एट द सेम टाइम जिनका मोबाइल नंबर हमारे पास है जो बैंक से मिला है उनको हम एसएमएस ट्रिगर करते हैं। दूसरा, एक रीअश्योरिंग, जैसा सर ने बताया कि आपकी पेंशन उसी बैंक खाते में कंटिन्यू रहेगी। एज फार एज बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इज कंसर्न, आपका पेंशन में कोई चेंजेस नहीं होना है, सेम उसी अकाउंट में जाएगा। एक चेंजेस ये ज़रूर आया था कि स्पर्श में पेंशन जो क्रेडिट होती है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ होता है, बट इट विल रिमेन कॉन्टिन्यूअस फॉर द सेम बैंक अकाउंट। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम पेंशनर्स को माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेशन के बाद बेस्ड ऑन उनका, यहाँ पे जो लॉगिन क्रेडेंशियल का इशू है ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आया है और उनमें भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमईएस और बॉर्डर रोड्स। रीज़न बीइंग उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन किया और हर एक पेंशनर को हमें मैपिंग करना होता है केस टू केस बेसिस पे कि उनका हेड ऑफ ऑफिस आज की डेट में क्या है। इट टेक्स सम टाइम एंड उसको भी हमने प्रोसेस को और शॉर्टन किया है। एंड जिस भी महीने, लेट्स से somebody got migrated in November, तो by the 15th December they will get the login credentials. That timeline we are assuring। और जैसा मैम ने बताया कि हम जो इंटीमेशन मैसेज दे रहे हैं उसको हम और रीअफर्मिंग और उसमें चेंजेस कर रहे हैं सो दैट कन्फ्यूज़न ना रहे और पेंशनर्स को जानकारी। तीसरा, बहुत सी क्वेरीज आज की डेट में आ रही है, लगभग 12.5 से 13 लाख पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं कि आप कब माइग्रेट होंगे। माइग्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें 3-4 बड़े स्टेजेस हैं। सबसे पहले पेंशनर्स को आइडेंटिफाई करना कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, किस पीरियड के हैं, क्या उनका पेंशन एंटाइटलमेंट है, फिर उनका पेमेंट मैच करना जहाँ पे उनका पेमेंट जा रहा है, इसके बाद करंट मंथली पेमेंट जनरेट करना और उसके बाद माइग्रेट करना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टेजेस में उसमें कोई पिकिंग नहीं है। जब इनिशियल हमने माइग्रेशन किया था तो हमने पहले 7 सीपीसी पेंशनर्स को किया था, आज की डेट में हम सबको एक साथ कर रहे हैं जिनका डेटा करेक्ट हो जाए। तो वी आर टेकिंग अप नाउ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 1 लाख माइग्रेशन पर मंथ, दैट इज़ द टारगेट टू वर्क। इसके अलावा कुछ इश्यूज आए थे जिनको हमने ठीक किया। सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस में अक्टूबर माइग्रेशन में रैंक को लेके मैपिंग का एक इशू आया था, उसको हमने करेक्ट किया है। कुछ केसेस अभी भी बचे हुए हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं बिफोर 31 दिसंबर विल कंप्लीट एंड क्लोज देम और उनका सही रैंक और ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा बैंकों में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज नहीं था। कुछ बैंकों के पास पेमेंट हिस्ट्री वगैरह करेक्ट फॉर्मेट में थे, कुछ के पास अलग फॉर्मेट में थे, और जब हम सारे पेंशन्स को एक सिस्टम पे ले आ रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें एक तरह से ना अवेलेबल होने में कुछ दिक्कतें आई। कुछ पेंशनर्स के केसेस में पेंशन स्लिप में इनकरेक्ट या रॉन्ग डिमांड या एरियर भी हुआ है, तो अभी हम उसको ठीक कर रहे हैं लगातार और इस पर हम काम कर रहे हैं।
डिले इन इशुएंस ऑफ कोरिएंडम पीपीओ, अभी पोस्ट 16 में कोरिएंडम पीपीओ प्रोसेस हो रहे हैं। प्री 16 में हमने जो पिछले 4 महीने में किया है उनका कोरिएंडम मॉड्यूल वी आर डेवलपिंग एंड होपफुली विल स्टार्टेड सो दैट अगर प्री 16 पीरियड का किसी का कोरिएंडम पीपीओ है दैट विल गेट स्टार्टेड। एंड फ्यू अदर इश्यूज, इनकम टैक्स जो हमारा सेगमेंट है यहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्शन जो हो रहे हैं इनमें कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। दिस इज़ दी वन एरिया जहाँ पे हमें थोड़ा सा और काम करना है एंड वी विल क्लोज इट ऑन प्रायोरिटी, दैट इज़ दी वन सेगमेंट। बाकी आपकी जानकारी के लिए है कि एडिट राइट प्री 16 का हम तुरंत कुछ ही समय में देंगे एंड पेंशनर्स हु आर आउटसाइड द कंट्री उनको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए डेडिकेटेड ईमेल आईडी है जिस पे वो अपना सर्टिफिकेट मेल कर सकते हैं जिसको हम सिस्टम में अपलोड। तो वन लास्ट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया कि कई यूट्यूब वीडियोज़ हैं वहाँ पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस हैं। आवर रिक्वेस्ट इज़ वी हैव अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल पीसीडीए पेंशन का डीपीटीआई इलाहाबाद, आप प्लीज़ इसको देखें। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इंसिडेंट बताऊँगा। एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें था कि स्पर्श इज किलिंग वर्चुअली स्पाउसेस बिकॉज उसमें डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ आ रहा है 1/1/1970। हमने उस केस को चेक किया, डेटाबेस में ऐसा नहीं था एंड बट वो सोशल मीडिया में आने के लिए काफ़ी इशू हुआ। तो दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट एंड सजेशंस कि प्लीज़ आप सारी जानकारी के लिए जो ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है उसको दें। दैट्स इट फ्रॉम अस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं माननीय सेक्रेटरी ESW श्री विजय कुमार सिंह से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना संबोधन करें। Honorable Defense Secretary Sir, FADS Madam, Vice Chief Naval Staff, Middle Chima, Secretary NCS, senior officials. SPURS is a very good system. In fact, it's a very good thing which has happened, and we must compliment the CGDA and PCDA office to implement it so well. But definitely, the speed of implementation has been a little fast. So the migration has created some problems. So what I will just focus on my observation that in the CPGram, it is attracting a lot of grievance thing also. So we disperse figures in the top of disposal list also because most of them are disposed. But definitely since the number of grievance coming is so high that even pendency level is shown, very absolute number of large number of pendencies are shown. So most of the grievance which I have seen is coming due to basically name mismatch, spouses detail mismatch, spelling error, those type of things. So banks are also helping, the centers are also helping to correct those things. But what I feel, the common service center can be leveraged because the spread of common service center throughout the rural area, because large number of our ESMs come from the rural area. And for them, approaching a regimental center, approaching an army office or these type of centers, even bank may not be so easy. The common service center is available all over the country, and the village entrepreneur who is running it, he has some incentive also because we use this service for correction of the election data. From when I worked for the election commission, I remember this gives a very fast result because their expense is very fast. So if I will urge PCDA office to get in touch with the CSC system so that if we can resolve these things in a very fast manner, that will be very nice. So that was one thing which I wanted to share. The second is that the last slide of Mr. Praveen Kumar, that it's the journey of SPURS is exciting till today, but it is going to be more exciting in future. Because the area which we are looking at, the ECHS, resettlement, and even Kendriya Sainik Board, state government, Raj Sainik Board and Jila Sainik Board activities, what I find the main problem which everybody is facing is there's one single database to operate upon. Even wherever I go, all state governments are asking me that we don't have a verifiable good database of the ESM from their state, because every state wants to do something.
but the lack of proper data is creating problem. Even when the ex-serviceman goes back to his district, to get that ESM card from the Jila Sainik Board takes more than 6 months. Because again, everything comes back from the state to the Kendriya Sainik Board. Sainik Board gets in touch with the record office, verifies the data and goes back all manually even today. But once spurs being online, everything can be done automatically. Even the Jila Sainik Board thing can be done on the same platform. And before the retirement, we can hand over the ESM 1 card, which will have all the facility which they need. Even CSD thing, Jila Sainik Board for their resettlement and all. Even private employers are asking that, can you give us some searchable database with their activity, their competency, their training, the area which he has worked, their skill level and all. So we are doing some stakeholder consultation, and some first 2 is imminent basically. So all these details can come for the ex-service veterans, so that even the better employment opportunity can be made available to them. Even a lot of micro enterprise development requires the knowledge regarding their skill base, because now defense is so technical and they work in so many highly technical area which has a lot of commercial application after retirement. So he can earn quite a bit. The craze from the government employment post retirement may also reduce a bit if we are able to help them get the better remuneration from their own self-employment. So those are the area we are working. We will very soon come out with some idea that how to take this forward. I once again compliment Madam FADS and CGDA for taking out this drive, and this extension drive, this resolution thing is very good happening, but if we can speed it up further, so that these small minor mistakes can be corrected quickly, that will be very nice. So thank you very much, and all the best to everybody involved in this first drive. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं माननीय रक्षा सचिव श्री अरमाने गिरिधर जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। Good afternoon to you all. Sri Vijay Kumar Singh, Srimati Rasika Chaubeji, Financial Advisor of Defense Service, Admiral Chima, Admiral Gormande, Senior Officers from the Defense Services, Media, and most importantly, the focus of today's meeting, Defense Pensioners. It is heartening to be among all of you today. In fact, giving pension to the government employees is a solemn commitment government has made several decades back. Especially fulfilling that promise to the service personnel who put their life on the line for the country shall be regarded as a sacred duty by the Defense Accounts Department. Defense Account Department is one of the oldest wings of the government, maybe older than most of the government departments in the country. It must have started during the East India Company days itself. The Accounts Department has a huge task on its hand. They have been doing it diligently with great alacrity and a lot of commitment and sincerity. I am sure they will make anything given to them a great success. And most importantly and hearteningly, I am assured of the success of the important task of making Sparsh user-friendly is the fact that Srimati Rasika Chaubeji heads it. I have seen her functioning when she was Additional Secretary in the Ministry of Steel. During the COVID time, when nobody was working, in fact, entire government was shut down, she alone was handling the Steel Ministry and providing oxygen, literally and figuratively, to the COVID effort. Many of the officers
in DMA and in fact in Railway Ministry and in Cabinet Secretariat and PMO were aware of her services during that period. So it is one redeeming feature for this Sparsh, I am quite sure of. The other important fact is that TCS is handling this. In fact, where can I see the Vice President of TCS? You are there. TCS was my first employer. I joined TCS in 1985 from IIT Madras campus directly. I have great regard for the Tata companies. They are very professional and they are in fact very committed to India. That's the most important. That puts them in a unique position to contribute to this task of making Sparsh really user friendly. But I have certain fears. I have seen TCS, as I have told you, last more than 35 years. I started working there for a few days, of course, a few weeks only. Later, I was associated with them with the work of the e-office. First, we started in Andhra Pradesh. We started designing e-office, and it was later copied by NIC, and now everybody uses e-office. The manpower deployment by TCS has to be qualitative. This is a very important program, and more than 40 lakhs of the defense personnel are going to suffer if you don't give quality people to this program. You have to deploy the best of the software professionals for this program. Any compromise on the quality will create a huge problem. I sense that happening already. The fact that indexing was done based on the alphabetical key, the name has emerged as the key for identifying the pensioner. How can that be done? The service number should have been used, or Aadhaar number should have been used, or a bank account number should have been used as key to identify the pensioner. So this kind of mistakes, see, machines are dumb. And human beings can be insensitive, but they are generally more intelligent than the machines. So when we are writing a program, it has to be done like a child is being explained. So this, I don't know how we missed it. But as I earlier said, the commitment of the FADS and the commitment of Tata Group to the country are the two redeeming features. I expect the combination of the two to solve the problems being faced by the Sparsh program. And my promise to all the pensioners today is that till the last problem is sorted out, the Sparsh will not become mandatory for the pensioners. We will not impose this system without checking its the capability to do justice to the pensioners in disbursing the pension. There will be teaching problems in every software program. The software, as I said, has to be written like a child being made to learn the basics of alphabets or even language. So there can be huge problems in explaining that to a machine, how to process this. But similar things were done earlier in government. Like we have the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, where more than 2 crore farmers' data was collected from more than 30 states and union territories. Their Aadhaar numbers, their bank numbers, their names, their land holdings were collected and computerized, and today we are transferring. You must be seeing every 3 months the Honorable Prime Minister presses a single button, computer button, transfer the money to the accounts of more than 2 crore farmers in the country. That entire exercise was done in a few months. So it's not an impossible task. Not impossible because the
jam trinity, that is the bank account, the Aadhaar number, and the mobile number. They have been triangulated. These three establish the identity of a person. If you have the bank account in your database, you get the other two automatically. So there shall not be any problem if you have bank account or Aadhaar number or even mobile number to get the other two. Yesterday, I was discussing with General Ponnappa the problems being faced by the pensioners and in rectifying the database. He listed out around 8 issues which are related to the migration, and two in addition were regarding the technicalities which ECS has also to attend. These things now I realize are causing a huge problem which need to be simplified, which need the attention of the highest levels in TCS. Of course, myself, the Secretary Servicemen Welfare, and FADS, all three of us will put all our efforts, ensure that all necessary support is given. In fact, Farsh is one of the first things I wanted briefing on as soon as I joined as OSD in the Defense Ministry, and I will continue to pursue this till the last problem has been sorted out. My request to the pensioners is that many of you have really operated most complex systems, weapon systems, and are quite familiar with all these things, how to make complex systems work. So making sparse work is not a difficult thing for you. Whoever is in big metropolitan centers and nearby, you kindly help these people, both the Defense Accounts Department as well as TCS, to fine-tune this to make this system really user-friendly. User-friendly, like you see the Apple iPhone. The moment you want something, the solution must appear on the screen. That's the kind of user-friendliness which we require. Some of the issues being explained by additional CGDA was that you did not choose this, so you didn't get that, you didn't get pension. You should have chosen that option, that's why you are not getting pension. That is not acceptable. What he has to choose, your program should suggest. Like, do you have conviction? They have conviction, that's why they serve the country. So whether the question was framed properly regarding conviction is the question. So you have to make it really user-friendly. As somebody told me, I have not seen London, but if you need some direction while traveling on a road, you will find it straight ahead of you. Like that, wherever you need direction, your program must be. I want that amount of user-friendliness brought into this program. Then only it will be acceptable. Till that time, we will be after you. We will not leave you. And I really look forward to interacting with the veterans on more occasions, more happier occasions where you have achieved something, we have achieved something. Thank you very much. Jai Hind. आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद माननीय. I would now request the FADS to felicitate the dignitaries on the dais. Secretary Defense, Vice Chief of Naval Staff, Secretary ESW,
and Secretary, National Security Council Secretariat. Very much, ma'am. इसी के साथ हम इस सत्र के समापन पर पहुंच चुके हैं. We would like to express our heartfelt gratitude to all the dignitaries on the dais, heads of pension associations, and our defense pensioners who have joined us here today. We would also like to thank all the various officers and offices who are integral to the success of Sparsh. We also express our special thanks to all the bank officials present today, our friends from the media, and all those who have worked tirelessly to make this event a success. अब मैं मुख्य अतिथि, डायस पर उपस्थित गणमान्यगण एवं अग्रिम पंक्ति में बैठे विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे स्पर्श सेवा केंद्र की ओर प्रस्थान करें. हॉल में उपस्थित आप सभी से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि के प्रस्थान की प्रतीक्षा करें. धन्यवाद. अब मैं सभी पेंशनरों से अनुरोध करता हूं कि हॉल के गेट नंबर 4 से जलपान के लिए प्रस्थान करें. All the other dignitaries in the hall are requested to proceed to the dining hall for high tea. Thank you very much. Jai Hind.